हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे। आज आपको एकदम खुला खुला आसमान दिख रहा है और तेज़ धूप दिख रही होगी। और ये देखो, ये नालायक लोग दोनों भी, हाँ, मुझे कितना हैरेस करते हैं आपको क्या पता है। तो हम आए हैं अभी बहुत ही खूबसूरत जगह, एक छोटा सा अफ्रीका का गांव है केन्या में। मतलब केन्या में एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे हम आए हैं, किसी के रेफरेंस थ्रू आए हैं। थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली हम वहाँ पे क्या देखने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत है। पहले तो ये मैं बाहर का ही दिखा देती हूँ कि कैसा है ये। और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आज कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको भी और हमें भी, क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं। तो हमारे साथ, हाँ, पहले तो मैं दिखा देती हूँ कौन कौन आए हैं। हम ये 4 और मायरा और दिव्यांश भी आए हैं। और फिर यहाँ पे है डेविड। तो डेविड के साथ हम आए हैं यहाँ पे, और उसका यहाँ पे फ्रेंड रहता है जो कि हमें कुछ अलग चीज़ें दिखाएगा अफ्रीका की। तो डेविड, व्हाट he can go? Yes, he keeps bees, he keeps honey, he makes honey, keeps dogs, German Shepherd dogs, he keeps fish, he rears, he does some farming. Okay. Yes, and the rest. So let's go. He has gone to call him, he's coming. So. No, here he's busy 24/7 Okay. because of the big in him. सा तो उसने बताया, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा कि उसने क्या बोला। तो मैं बताती हूँ। वो बोल रहा है कि यहाँ पे फ़िश फार्मिंग होता है, हनी फार्मिंग, मतलब ये बी फार्मिंग होता है ना, जो हनी फार्मिंग ही बोलते हैं, वो होता है। और उसका खुद का यहाँ पे खेत भी है अंदर। तो ऐसा कुछ है, देखते हैं, जाके पता चलेगा। जर्मन शेपर्ड डॉग्स का वो सेल भी करता है, मतलब ब्रीडिंग करता है और फिर सेल करता है, ऐसा भी है। तो मैं दिखाती हूँ। पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ पहले कैसा है। एक बहुत ही अंदर एकदम गांव है ये। यहाँ पे फार्मिंग किया है ये, शायद उन्होंने क्या लगाया है, ये उनका सुकुमा करके भाजी आता है ना, वो लगाया है ये। और ये पूरा ऐसा गांव का एरिया है और यहाँ अंदर जाना है हमें। तो वो ना एक्चुअली ही इज हियर। बहुत ही रफ रोड है, देखिए ये बहुत रफ रोड है। Johnny Plata, come back. दिसत नाही इतर त्याच्यात ते। एकट्याने जर बघितलं काय आपली एवढी फाटून हातात लांडग्यासारखं दिसतंय त्याचे कान। नाही, खरंच 1 लाख वरते, 1 लाख वरते। This is a young puppy, it's still small. Small. No, it's not biting, it's still young. ते बघा, It's a baby. It's not fearing. Come and touch this one. This one is not a problem. Come. It's still a puppy. Come and touch. Yeah, you can touch. You can touch it. It's still a puppy. So ब्लॅक पॅन्थर आहे। the mother. No, puppy. She's the mother. Yeah, this one. She's shedding, so that's why she looks like this. So her mother, she has given me very good puppies usually. And the puppies are very expensive. दिव्यांचं बघा, कुत्रा बघितलं बाहेर आल्यावर बघा कसं येते मागं। तू इकडून आला? हे बघ, दिव्याची इकडून आले.
She's a special woman. Sit. Sit. Let's. Don't run away, yeah? Come. Don't run away. They are still new, so they won't do anything. They are not biting. हे काय वरती थांब. They are still new, so they can't bite. This is for sure. It's a very special dog. Come here. Tina, come. Tina, come. Tina, come in. ये दिवेश ये वाव. येस. So I also I know this. Even I am also doing this. In India. Yeah, in India, yes. Almost I have 70 to 80. मायूला दाखवा. गोटे. this one हे बोकड असते बरं का. बोकडाला ज्याला मेल आहे त्याला बोकड म्हणतात. तेच की मग. हे क्यूट आहेत पांढरे. हे बघा हा बोकड आहे. हा तो अच्छा दाढीवाला बोकड. हा चांदवाला बोकड आहे. चांद नाही तो. हे आहे का? हे दावतवाला बोकड आहे. What does it mean? It is, you see the way they look? They're from South They are Africa. very different. Yeah, they are different. They have a black head. And then white body. Yeah. And then the meat is very sweet and very expensive. A kilo is 1,000. तेच काय असतं एवढं. त्याच्यात काय टाकले? मासे आहेत त्याच्यात. हे? Within 30 minutes they start walking after birth. Yeah. So it's only a few days old. I want to carry a short like a small one. Yeah, you can take. How is it been the come on? प्रदीप दादा दे ना मला. My guys tender. Unaona ndio kule. Utachukua unga ingine weke ndani. 2 मेंढ्या सोबत. पकड. नाही, बघा का. 3 मेंढ्या झाले ते कसं. सोबले मुंबईचे मुंबईचे आणि किती हेवी आहे. कसलं भारी आहे पण ते. इकडे बघ. What will be the cost? माझं नाही काढलं ना. Right. in 3 माझं नाही मायू काढलं. घे बेबी आहे मायू घे हा. These are kind of tilapia kind. But here we have a different type. Let me throw there, you see. Here we have catfish. Catfish, हा? इथे कॅटफिश आहेत आणि इथे सगळे तिलापिया आहेत. हे सगळ्या तिलापिया आहेत. Watermelon. Yeah, I know. हे सरक ना दादा 1 मिनिट. To Western also. So when you do like this, it's easier. You see, when you plant, you just pull like this. Yeah. Then you this put in the soil. Right. Okay. And it's easier. What is this? This is watermelon. Okay. And then this is this one is- capsicum. See, you just put like this. You put in the soil, and then it continues. So And this one? पुढे वाटर this is pumpkin. ते काय आहे? वॉटरमेलन आहे हे कॅप्सिकमचे आहेत हे पंपकिनचे आहेत खालचे काय आहेत नाही. Where is cannabis? This is Watermelon. And this one? गांजा कुठे? ते This is स्प्रिंग onions. ओनियन Oh, yeah. It's also a style. गांजा कुठे? Where is cannabis? Cannabis. Are you farming? Sorry? Cannabis. Weed. No. It's not allowed. Yeah. Just joking. Yes, I know. Yeah, it's not. So I teach them also. They don't have to. Oh, this side. make Honey. Yeah, that's my house for the bees. Oh. What is this? Also this one. This is what I started with. From Kenyan ones, and these ones are imported hives. They are not from Kenya. You can come inside. You can look inside. शाळेंचे लेंडे पण टाकले त्यांनी. वाळले आणि त्यात. देखिए अभी ये क्या बता रहा है पता है ये बता रहा है कि छोटे से जगह पे फार्मिंग कैसे करते हैं ये भी वो सिखाता है प्लस उसके यहाँ पे बी फार्मिंग है मतलब हनी जो बनाते हैं ना उसके लिए वो अलग से उसने एक जगह बनाई है और आप देख सकते हो मधुमक्खियाँ बहुत सारी घूम रही है आगे पीछे और यहाँ पे उसने जो भी जो गोट्स और शिप का जो वेस्ट होता है उसको खाद की तरह यूज़ किया है आप देख सकते हो और ये छोटे छोटे प्लास्टिक के रिंग्स बना के छोटी जगह में कैसे फार्मिंग करना है वो भी वो सिखाता है व्हाट्स योर नेम बाय द वे
Charles, Yeah. tell us everything about your project. What do you mean? Like what is the purpose of these things? Oh, why I do this? Yes. You see, then if we want fish, we can get from the fish. Yeah. And most Africans, they use their money, they work for food. Yes. So yes. when you don't have to work for food, then you can have savings. Of So course. even I have solar, I don't use the electricity. Oh. So you see, I don't have bills. I have also water from the treated water here. So I have no bills any month, only for calling, Yes. only bills for Phone. making phones. Yeah. But all the other bills, I don't. Then also, I sell to other people. Like my best clients for the box are the Indians. I have a family in Elgonview, and so I supply to them 5 liters in every 2 days. Oh, And I goat sell, milk. yeah, I sell 200 per liter. It's expensive, you know. So the reason why I do farming is also to educate people not to use a lot of money on bills like buying vegetables, buying milk, buying honey. If people can do this, then we can live good life also. And also like vegetables, if you are planting your own, then you will not spray wrong Fertilizer, yeah. So here we don't have any spray. Yeah. We don't have any spray because if you spray, you kill the bees. So I also teach people not to spray. You see, we just use from goats, from the sheep, and waste, from the yeah. goats. Yeah. So we just use that. That is As a what we are- fertilizer. as fertilizer. And with the dogs, of course, is security. I also teach people the best security is dogs, not people. And you are also selling dogs, yeah? Yeah, I sell dogs. Okay. I'm a breeder, I'm a recognized breeder in the country. I'm also registered as a breeder. So I sell dogs, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda. Yeah, I sell dogs. Okay. It's only that you've come the time when I don't have puppies. But already, you see the male you saw from Serbia that came 2 weeks ago. There is a female there, and But they are already males? No, The it's a size- male and a female. Okay, yeah. That female is pregnant, and already a puppy is booked. Okay. And one puppy from that will be 120. How much is the cost of the puppy? 120 for the import one. Okay. Yeah. And the local this The one? local ones, my puppy start from 40,000 to 120, 130. Which at least I can manage life. Yes, of course. So this all plot belongs to you? Yeah, belongs. It's your own plot? Yeah, it's on Okay. mine. But I want to shift here. Actually, I want to sell because I've gotten bigger land. I want to do it in a bigger way, and especially in my place where I come from, because many people are poor and they have land. Yeah. So you get people have land and they are poor, and I don't understand. Just like my Yeah. neighbors here, you get somebody has a big land, but he's crying and come saying, "Help me," Of which I course. don't understand. So Yes, yes. I would like more to educate them. Like for example, if a woman is doing only this, it's enough to keep her. She can sell vegetables. She can also have for the family. Yeah, yeah. So then also some men instead of just walking around, they can also do what I'm doing. Yeah. Like with this, you just buy beehives, you put them there, you have honey. Then the honey gives you money. Yes. Yeah, yeah. Do you sell it? Yeah, I do sell. Okay. I'll show you the place where I sell. Okay. My training place where I train farmers. Yeah. I have another kit there. When visitors come, they are, but the other side is for the food. Yeah? And this is where I do the training for people. So, like I have some honey here remaining. I think I have to. This is 800 each. This is pure honey. No anything added inside. You are very interesting. Yes. You became like Africans. Yes. Getting married in April. So you are inviting us? Oh, it's in Germany if you can manage. Germany? Just here. Yeah, if you you are very funny. Yeah, You can just come. yeah, that is okay. You are very interesting. Yeah. Just here. देखिए तो ये हनी है ना, ये उनके फार्म में बनी हुई हनी है, उन्होंने खुद ने निकाली हुई हनी है, और ये मैंगो जूस भी वो खुद बनाते हैं. तो ये हनी हम उसने तो 800 शिलिंग बोला था. You see, your boy loves my juice. It's very good. हम कुछ ना कुछ कम करेंगे इसमें, लेकिन ये
पूरी प्योर हनी है, प्योर हनी एकदम, जो कि अभी आजकल मिलती नहीं है। आप पतंजलि के ले लो, डाबर की ले लो, सब में मिलावट है, लेकिन ये प्योर है। तो ये हम लेने वाले हैं और उसने हमें ऑफर किया है हम सबको। कैसा है मैंगो जूस? मैंगो जूस। तो ये हम मैंगो जूस पिएंगे। तो आज हमने इतना यूनिक चीज़ देखने को मिला जो कि एल्डोरेट में या केन्या में हमें बहुत ही रेयर देखने को मिला है। हमने देखी फिश फार्मिंग। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में बात नहीं कर पाई क्योंकि वो जल्दी जल्दी दिखा रहा था सारा चीज़। तो हमने फिश फार्मिंग देखी, डॉग ब्रीडिंग देखी, उसने अभी साइबेरिया से 2 डॉग्स, एक मेल फीमेल मंगाया है, वो देखा। फिर हमने गोट्स फार्मिंग देखी, शिप्स फार्मिंग देखी, और फिर उसने हनी लगाया है, हनी फार्मिंग की है उसने। हमने हनी बाई की वहाँ से। और फिर उसने छोटे से एरिया में हम कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ में। अगर आपके पास बहुत बड़ा लैंड नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, ये भी उसने बताया। और उसके छोटा लैंड, हाँ, और उसने खुद ने भी बताया कि वो किस तरीके से ये कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसका मेन मोटो है कि केन्या के लोगों के पास बड़े बड़े फार्म्स है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसका यूज़ कैसे करना है। मतलब लैंड्स बहुत है लेकिन उसका यूजेस नहीं पता। तो वो बोल रहा है कि मेरा यही मोटो है कि लोगों को अवेयर करें, छोटे छोटे लैंड्स में कैसे कैसे फार्मिंग करना है वो सिखाता है लोगों को। वो वैसा प्रोग्राम भी लेता है छोटे फार्मर्स का, यंग जनरेशन का। अभी वो स्कूल में भी जाके अवेयरनेस फैला रहा है कि फ़िश फार्मिंग कैसे किया जा सकता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इजीली फ़िश नहीं मिलती है। तो घर पे ही आप फ़िश फार्मिंग कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो आप कैसे कर सकते हो, आप खुद का सर्वाइवल कैसे कर सकते हो, वो ही उसका मोटो है। और बहुत ही यूनिक और नोबल कॉज से वो कर रहा है। ऑफ कोर्स उसको उसका बेनिफिट है, प्लस उसको ये सारे चीज़ों से वो दूसरों को भी अवेयरनेस फैला रहा है। तो हम Bring the dog so we can do advertisement. हा बरोबर आहे. ऐका की दादा तो काय म्हणतोय ते म्हणते डॉग घेऊन या तुम्ही, त्यांना मी चिकन टाकतो, ओके, त्याचा व्हिडिओ काढा. ठीक है। तो ये डॉग्स भी सेल करता है। उसके पास कौन कौन सा है बोलना? जर्मन शेपर्ड है, जर्मन शेपर्ड है, त्याच्यानंतर सायबेरियन हस्की है. हाँ, साइबेरियन डॉग्स है मतलब। I bring the dog, you do for me advertisement. ओके, उसके पास विस्की है, ब्रांडी है. तो वो बोल रहे हैं मैं डॉग्स लेके आता हूँ, और अगर तुम्हारे कोई भी मतलब व्यूअर्स अगर केन्या में देख रहे हैं तो वो मेरे से डॉग्स बाय कर सकते हैं। अभी तो उसने साइबेरियन डॉग्स भी लाया है जो कि बहुत ही हैवी और ऐसे होते ना फर वाले बड़े बड़े, आपने तो देखा ही वीडियो में, तो वैसे वाले भी है। तो वो बोल रहे हैं मेरे डॉग्स का थोड़ा प्रमोशन कर दो तो मुझे भी थोड़े कस्टमर्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं यहाँ पे डॉग सेलिंग होता है। तो अभी मैं शिप्स, हाँ, और वो शिप्स भी साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट की थी, तो वो भी उसने दिखाई। वो शिप्स यहाँ पे जनरली नहीं मिलती। तो अभी वो डॉग्स लेके आ रहा है। Yeah, good boy, good boy, good boy, good boy, good boy. वाह, Good boy, good boy. He's a very ओ, और चार्ल्स बोल रहा है वो 50 साल का है। चार्ल्स नचना है ना, हाँ, 50 साल का है, लेकिन उसका फिटनेस आपने देखा कितना अच्छा है। ये देखिए, ये ऐसे, ये तो yeah. चार्ल्स, विच डॉग इज दिस? This one is called Tom. German Shepherd. हाँ, जर्मन शेपर्ड, जर्मन शेपर्ड। Yeah. From Serbia. सर्बिया, Yeah. ओके। तो देखिए ये डॉग है, आपको किसी को भी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कोकन टू केन्या, ये मेरे चैनल का नाम है। और केन्या में, ऑल ओवर केन्या, युगांडा वो डिलीवरी करता है। No more. Yeah. और आप यूट्यूब पे अगर आपको किसी भी डॉग्स में, जितने भी डॉग्स दिखाए उसमें अगर इंटरेस्टेड है आप, तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो। तो चार्ल्स का नंबर मैं आपको भेज सकती हूँ, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, And the way he's running. या Really show dog. या Very nice. तो लेट अस गो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच. बाय बाय. Appreciate.
या थैंक यू अगले वीडियो में ओके जय हिंद जय महाराष्ट्र फॉलो करो सब जय महाराष्ट्र ही सिंग जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र. या जय महाराष्ट्र महाराष्ट्र इज अ स्टेट State, like you have the county. We have the Maharashtra county. महाराष्ट्र Oh, is the country in Maharashtra. India. महाराष्ट्र Maharashtra Yeah. is a We state. have 28 states. You know Mumbai, yeah? Mumbai? Yeah, Mumbai is the capital of Maharashtra. Yeah. So we are from there. That's the reason, we need knowledge. That's the reason we ask you, how much you stay in this one. Okay. Okay. I'm sure this video, all the Indians in Kenya, Yeah, they will watch. Yes, yes, yes. Yeah, India also. India also support us. TikTok, it's Hey, just Mayo. for the show. हा नको जाऊ दे राहू दे नको नको Don't fear, it's for the show. हे काय झालं It's not for security, so this is nice तिला उचललेली मगाशी. it's just meant for the show. You see, Mayu? he's just coming to you. He likes to play with you. He can't bite you. No, ते जाऊ दे कुठं काय झालं ते बघ. लक्ष नव्हतं ना. तो चलिए अभी बहुत ही यूनिक सा कुछ ऐसे देखने को मिला सिर्फ डेविड के वजह से तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही. व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में आप बता सकते हैं. चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. केन्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ. वो आपको भी पसंद आ रहा है कि केन्या में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, मिलती है, देखने को मिलती है. लोग, यहाँ के गांव और बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिल रही है. तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए. श्री स्वामी समर्थ. बाय.